Hello everyone, welcome to the Generation Gap podcast. I'm Temurni, that's Daniel Ahmed, and today we're going to talk about the upcoming 7 match T20 series between Pakistan and England. And this episode is brought to you by Ravi Shastri's Tracer Bullets. So, moving on to the next part of our discussion. So, I hear that you've been looking at your squad, Daniel. So, Yeah, what news do you have about that? yeah, yeah. So, this video should have been sponsored by English Hammers and Nails so that we could get the best ones. Because we're screwed. We're really screwed, aren't we? They're really good. Um, it's क्या कहते हैं? It's like one thing I've noticed is कि एक तो उनकी squad is they all of them have a 30 average और यहाँ पे तो हम लोग 25 को क्रॉस करने बड़ी बात होती है. And all of them Acha, have like a strike rate that's like 130 plus. And these are like they're young players. These are uncapped players. So acha. yeah, उस sense में I feel like that's a bit dangerous. And then we have some players that are just established talents, right? So we have your Alex Hills, we have your David Milans, Joss Butler, Moeen Ali. They're gonna they're gonna screw with us. And अगर ये नहीं चले तो नया talent चल जाएगा. So like they've come in like with very strong expectations. और मैं ये सोच रहा था कि पिछले साल हम बहुत बोल रहे थे पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच होगा वर्ल्ड कप में क्या होगा, right? And Pakistan England were like joint favorites of that World Cup. Hmm. Um, now that I think about it, I think we would have lost that match. Hmm. हाँ ऑस्ट्रेलिया वाला फिर भी जीत सकते थे अगर वासन अली का ड्रॉप ना होता बट आई थिंक इंग्लैंड वुड हैव आउटप्लेड अस इवन उन्होंने बुरा खेला था पिछले वर्ल्ड कप में बट लाइक स्किल्स वाइज आई थिंक देयर बेटर देयर वे बेटर देन Hmm. अस. Acha, what about the question of home advantage? So, I think usme, what we did want to talk about was that yes, they have a good record, but do they have a good record in Asia? Now, a complication उसमें ये आ रही थी हमारे लिए कि they haven't played a lot of matches in Asia, as you mentioned, or at Yeah. least you had seen. But I'm pretty sure they played a lot of matches in India, क्योंकि obviously big three आपस में तो बहुत खेलते रहते हैं. So I'm sure England की team इंडिया में भी तो गई होगी वहाँ पे. They have similar-ish conditions, not exactly the same, but still somewhat similar conditions. तो वहाँ पे इनके records के कोई information है, at least in terms of limited overs, T20s, one day internationals, etc. Yeah, so here's the thing. It's very hard to find it because A, it's a very young team, and B, like I mean, one thing we can look at is their PSL records, and वो बहुत अच्छे हैं. So so your players like David Malan, they have good PSL records. But like I think जो T20 जो like जो stats आती हैं, वो they show like your record all throughout the world because T20 is played like a monolith these days. For some reason, this is like T20 international T20. उसमें इनके like I looked at their T20 records overall and they were all pretty good and these players have played in the PSL. So उस सेंस में इशू आ सकता है. अगर मैं ओडीआई का देखूं और टेस्ट का देखूं ओडीआई का तो they haven't played in a while, right? So like इंडिया के साथ भी they haven't played in a while. um, and like टेस्ट का तो आप कुछ कह ही नहीं सकते. So like टेस्ट तो आपको पता है क्या हालात है उनके वहाँ पे. So like in that sense I feel like क्या क्या कहते हैं T20 record तो उनका strong है. This is T20 leagues का record. So there is no reason to like believe that they won't play well. Um, yeah, I mean, there's obviously that home ground pressure, but I feel like एक factor to consider करने वाला is um, the fact कि 7 T20 खेल रहे हैं. So I think one thing that like really helps teams is when they're playing like 4 to 5 matches या 3 matches ऐसे up. That doesn't give you a lot of time to adjust. But like with Hmm. 7 T20s, that's like 4 T20 तो कम से कम series चलेगी ना, right? So unless Pakistan wins all 4, which is unlikely. हाँ, Um, सही है. so like that gives them a lot of time to adjust to the pitches. Um, and that बिल्कुल. you know it's these are really good players. So I doubt that they won't be able to adjust. So yeah. So I mean, coming to series के बारे में, let's talk about the big points that we have so far. Of course, the biggest being England coming back to Pakistan after 17 years, right? So I think in that sense, you probably don't remember the last series
that England played in Pakistan. I think, or do you have some like fleeting memory of that? I probably not, ये most वो है ना likely, जिसने but वो बॉल मारी थी इंजमाम को और इंजमाम ने रोक ली थी. this is the 2004 वाली series मेरे हाँ ख्याल वो से. जो तो उसको इंग्लैंड बॉल में आए मारी थे थी और ऑब्स्ट्रक्शन इंडिया हो ने गई बड़ी थी. विकेटिंग की और शुएब अख्तर ने जो है वो बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी. And we had like this very classic sort of a leg spinner, fast, quick bowler combo that kind of took us over the line against England. So I remember that series quite fondly. उस time पे, believe it or not, Kamran Akmal was the shit. Or Kamran Akmal at the time was like, उस time पे he was the best wicketkeeper batsman, or almost one of the best wicketkeeper batsmen in the world. Runs भी मार रहा था, catches भी पकड़ रहा था. He was fantastic in that series as well. पहले एक दो साल तो, I mean, it's hard to believe for a lot of people, लेकिन Kamran Akmal was a really good player. और इसने बड़े अमेजिंग किस्म के मैचेस खेले थे, बड़ी अमेजिंग किस्म की इनिंग्स बनाई थी. आई स्टिल, इन माय ओपिनियन, ही हैज वन ऑफ द टू ग्रेटेस्ट टेस्ट इनिंग्स दैट आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ. आई विल पुट देम राइट अप देयर. एक जो इसकी इनिंग्स थी अगेंस्ट इंडिया इन कराची, कि जिस मैच में आसिफ ने भी वो विकेट ली थी पहली दफा. यू माइट हैव सीन लाइक हाइलाइट्स ऑफ दैट. उस मैच में ही हैड दिस अमेजिंग इनिंग्स जहाँ पे आया था और बॉल वाज लाइक स्विंगिंग अ माइल. और इरफान पठान जो बॉलिंग कर रहा था, आई थिंक उसने हैट्रिक भी ली थी. पाकिस्तान वो लाइक, आई डोंट नो, हाँ पता 25 पे 5 आउट थे कि 6 आउट थे, इस तरह से कोई सिचुएशन थी. सो उस टाइम पे आके ही जस्ट स्टार्टेड not only making, he made a century, but he actually made it while counter attacking. So constantly boundaries भी hit कर रहा था, चौके भी मार रहा था in those conditions where the ball was swinging around. So that was like one of the most remarkable innings I've seen. और secondly जो इसकी एक innings थी जो उसने इंडिया में खेली थी, जब ये और अब्दुल रज़ाक खड़े हो गए थे, उन्होंने टेस्ट में बचाया था. On like a fourth day, fifth day, Indian pitch, spinning track के ऊपर हरभजन और कुंबले bowling कर रहे हैं. I think third day था कि fourth day था, I'm not exactly sure, but they had to last like almost 2 days to save the match. और इन्होंने मतलब मैच बचा लिया था. So just two of the most remarkable innings, surprisingly, came from Kamran Akmal, but enough about Kamran Akmal. That's a bit of a क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं, detour जो मैंने छोड़ दिया था. But coming to the main fact of England coming back to Pakistan after 17 years, so one of the things that I read about it was the PSL kind of played a role in this as well. A lot of people who actually kind of helped push this tour or ahead, or a lot of the players, the momentum that came from the players was because of the players who came to Pakistan, who visited Pakistan for the PSL, who realized that the place was safe for them to play, and they went back and they said, it's not a big issue. We play there all the time. We can come here and we can tour as well. So I think that part of it might be ignored by some people, but I think again the PSL kind of played a positive role in bringing the team back into it. But what exactly do you have to say about that? Yeah, I think it's not like that, I guess, black and white in my opinion, because the पिछला साल जो सियासत हुई थी, where like England sort of pulled out from the tour. You sort of see like how Ramesh Raja was sort of like almost like screaming on the top of his lungs because नया नया आया था, उसका impression बनाना था. So like he was like, yeah, so like उसको इमरान खान भी बहुत बोल रहा था. So and I think जो चीज जो the nail in the coffin for them to actually come here the very next year was the fact कि हमने इनको sorry 2020 में हमने इनकी help की थी. So when their business was down, we toured their country and we helped them out. They didn't return the favor, and that is a very bad look diplomatically. So this is essentially that giving back tour that they should have given last year. I think वो एक तरह ना हम गन पॉइंट में लाए उनको, because I think I'm pretty sure रमीज राजा ने थ्रेट ये दी होगी कि अब हम कभी नहीं आएंगे. And honestly, we can live without an England tour. Like England में टेस्ट खेलने में बड़ा मजा आता है, but like when we talk about our 5-year schedule, England is not like in our most anticipated test, I guess. I mean, to be fair, हमारे तो कोई भी anticipated test नहीं होते. But although I do look forward to it. I mean, maybe वो बात है कि I'm more of a old school cricket fan, so I guess मेरे लिए England का tour is always a big thing, and certainly one of my most enjoyable cricketing memories have come from those. But yeah, I mean, उस sense में I guess अगर वही क्या बात है कि
maybe a bad sort of visual कि पाकिस्तान इंग्लैंड को गन पॉइंट पे लेके आया, but Yeah. considering how things have happened in Pakistan before, but वो बात है कि yeah, I think it's fair enough कि उन कमेंट्री को तो करना चाहिए था, and sort of long time coming. Australia वाले भी बहुत लंबे अरसे के बाद आए, and in a way when you look at the actual amount of time, it kind of boggles your mind कि यार इंग्लैंड की टीम 17 years के बाद आ रही है, ऑस्ट्रेलिया भी कोई पता नहीं कितने सालों के बाद, ऑलमोस्ट 20 साल बाद आ रही थी वो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के पूरे 25 साल हो गए थे आई थिंक। 25 साल, हाँ, मतलब ऑस्ट्रेलिया 25 साल के बाद आ रहा है, इंग्लैंड 17 साल के बाद आ रहा है, मतलब इंतहा है, मतलब पाकिस्तान इज लाइक वन ऑफ द टॉप 3 क्रिकेटिंग नेशंस इन द वर्ल्ड, एंड समहाउ ये जो हैं आपके टीम जो हैं वो 17 साल और 25 साल हमारा टूर ही नहीं करते, तो उससे भी आपको अंदाजा होता है कि पाकिस्तान का एक सॉर्ट ऑफ क्रिकेटिंग एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ लाइक प्योर क्या कह सकते हैं सॉफ्ट पावर पाकिस्तान के पास कितनी है। इट्स नॉट मच, वही बात है, अगर हम उनको फोर्स नहीं कर सकते यहाँ पे आने में, एंड आई डू अंडरस्टैंड देयर आर इश्यूज विद टेररिज्म एंड ऑल दैट, अपनी जगह पे वो मसला मौजूद है, बट बावजूद इसके दिस इज स्टिल जस्ट सच अ ह्यूज यू नो पैसेज ऑफ टाइम कि आपके लिटरली बच्चा मतलब पैदा होके अडल्ट बन जाएगा इन द टाइम दैट यू एक्चुअली हैड 2 tours from England and Australia, which is kind of remarkable. But and in terms of the series, how exactly do you see it? Like, is हमारा, I think main goal तो यही है, as I see it at least, if you have something to add to that, you can. कि primarily as preparation for the World Cup, the T20s का आगे आ रहा है. Do you think it will be useful for us? Because obviously हमने already एक दफ़ा we played the Asia Cup. We've had a lot of T20 matches as well. Did the tour need to be this long? Like 7 T20s feels a bit like overkill to me. इतने ज़्यादा होने की शायद ज़रूरत नहीं थी, because I feel like maybe इसमें injuries के chances हैं and all that. I'm fine for them getting a practice, especially against a good team like England. That's a good idea because obviously high level of competition होगा उनके खिलाफ. So a lot of players will get tested, but again इसमें वही बात है कि, and again I think it feels a bit I mean I'm not exactly sure कि किस तरह से होगा. Like अगर आपने वर्ल्ड कप का स्क्वाड अभी अनाउंस नहीं किया था, I see this series making more sense in terms of a testing ground, कि जहाँ पे आप प्लेयर्स देख के आए, उनको टेस्ट आउट करें, उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद फिर आप अनाउंस करें कि अच्छा ठीक है ये लोग हमारे जा रहे हैं, या आपके स्क्वाड के जो लोग हैं. आई थिंक राइट नाउ इट्स मोर इन टर्म्स ऑफ अ टेस्टिंग ग्राउंड फॉर द स्क्वाड यू ऑलरेडी हैव. अच्छा ये प्लेयर्स हमने अनाउंस कर दिए हैं, अब हम टेस्ट करेंगे इनमें से कौन सी टीम में से आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते. और आई फील लाइक अ लॉट ऑफ दोस प्लेयर्स ऑलरेडी हमने उनको टेस्ट तो कर लिया एशिया कप में. अब यहाँ पे इतने ज़्यादा नए प्लेयर्स भी नहीं आए. I think the most people you can test out is maybe Haider Ali and Shan Masood, I guess. Bowling end पे तो कुछ खास नहीं है बंदे, I think जिनको आप लेके आ सकते हैं. And I really don't see it और कितने ज़्यादा players हैं जो कि, क्योंकि अब you don't really have Azam Khan in this. You don't really have other players that I can probably see breaking into the squad. तो अगर उनकी परफॉर्मेंस फॉर एग्जांपल यहाँ पे अच्छी होती तो यू कुड सी देम मेबी टेकिंग देम अहेड एंड ब्रिंगिंग देम इनटू द वर्ल्ड कप. लेकिन अभी वाला सीन नहीं है. अगर आपको ऑलरेडी स्क्वाड अनाउंस हो गया एंड से अभी जो प्लेयर्स के हमने नाम लिए थे a while back in terms of the new players that we have included in the squad, some of them performed really well. They won't really get into the team, right? Of course squad तो आपको already announce हो चुका है. Like we were talking about Amir Jamal, we were talking about Abrar Ahmed, who were in the squad. Like if say Amir Jamal, इसका बता था कि हाँ, again coming to these two players. So again हमारी assumption थी कि they probably had the same squads. Of course they don't. Shaheen is still injured. Shaheen will not be playing in this series. So he will be available for the World Cup, but he's not available yet. तो जो उन्होंने players रखे हुए हैं उनमें से इतना बता सकता हूँ कि I don't know much about them. Like Abrar Ahmed is a leg spinner. He's not an all-rounder. He's basically a leg spinner. He's a decent average. Like I think उसकी कोई T20s में 24 से 25 की average है. And वो बात है कि he's one of the few leg spinners that we have in the Pakistan team. There aren't too many. आपका शादाब है and there's maybe Yasir in test matches and that's about it. तो उस तरह से आई थिंक मे बी एक स्पिन अटैक में थोड़ी वेरिएशन के लिए आपको बंदा चाहिए. पाकिस्तान में आप खेल रहे हैं, मे बी स्पिनर्स की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है.
They might even be able to finally use Kushdev as an all-rounder perhaps. जो कि उन्होंने एशिया कप में उसको नहीं यूटिलाइज किया था. PSL में तो obviously he was very effective. So I think उसको भी किया जा सकता है. But वही बात है कि they maybe that's why they included Abrar in this. आमिर जमाल का केस इंटरेस्टिंग है. Because वही बात है कि after the World Cup, I think I don't know if you did, but I went and started looking at all the players with like higher strike rates in Pakistan domestic circuit just to see कि अच्छा यार अगर हम इन players को निकालते हैं तो किसको लेके आए. और ऑब्वियसली सबसे बड़ी डिप्रेशन की बात तो यही थी कि एक्चुअली पिछले PSL में सबसे अच्छा जो बैटिंग रिकॉर्ड था वो तो फ़खर जमान का था. फ़खर एंड एवरेज of around 56 and a strike rate of like 170 or something in the previous PSL. It was ridiculously good record. So obviously he was number 1. फिर आपका number 3 पे actually शाम मसूद था in terms of average and strike rate पिछले टूर्नामेंट में. सो वही बात है कि ओवरऑल में जाके देख रहा था. फिर बाकी जो आपके T20 डोमेस्टिक हो रहे थे वहाँ भी कुछ चेक कर रहा था. देयर वर सम प्लेयर्स हियर एंड देयर, बट इसका रिकॉर्ड मेरे सामने नहीं आया था. सो सरप्राइजिंगली ही एक्चुअली हैज़, आई थिंक बाकी में तो इतना इसका खास रिकॉर्ड नहीं है आमिर जमाल का, लाइक टेस्ट मैचेस में और जो आपके लिस्टे मैचेस हैं उसमें तो इसका बहुत ही आउटस्टैंडिंग नहीं है. बट ही हैज़ प्रीटी डिसेंट T20 रिकॉर्ड and he's also an all-rounder actually. Yeah. So he actually has a bowling average of around 27 in T20s, which is pretty decent for an all-rounder, and a batting average of 32.4 with a strike rate of 178. So again, that's a very impressive record. लेकिन उससे भी ज़्यादा surprising चीज़ मुझे ये लगी है कि he has this average with this strike rate, but he hasn't hit a single six in his entire T20 career so far. Sarfaraz 2.0. Sarfaraz 2.0. Turbo Sarfaraz, essentially. Basically, कि आप 180 का स्ट्राइक रेट अगर बगैर छक्का मारे आप कर सकते हैं तो that is an achievement on its own. वैसे I don't know how the guy managed to pull it off, but he actually has a pretty ridiculous record. बाकी आपका स्क्वाड सेम ही है as per the क्या कह सकते हैं the World T20 squad. लेकिन ये दो बंदे जो है नए हैं which I would like to see कि इनका किस तरह से परफॉर्मेंस होती है इन मैचेस में. यू हैव 7 मैचेस, तो आई होप कि इनको चांसेस भी जो मिलें और थोड़ा देखते हैं कि इनकी किस तरह की परफॉर्मेंस होती है. एंड आई होप कि इनको अगले PSL में भी देखने का थोड़ा मौका मिले जस्ट टू चेक कि किस तरह के प्लेयर्स हैं. इफ वी कैन एक्चुअली फाइंड समवन लाइक, वही बात है कि हाई स्ट्राइक रेट्स की बात कर रहा था तो आइदर आपका फ़खर था या फिर कुछ इंग्लैंड के प्लेयर्स थे. आई थिंक जेसन रॉय का था बड़ा अच्छा रिकॉर्ड और ही हैड अ स्ट्राइक रेट 170 और समथिंग. और फिर आपका आई थिंक इट वाज आज़म खान. कोई बात है, आज़म खान की बात कर रहा था, उसका स्ट्राइक रेट आया था. तो और भी उतने बंदे आपके बचते नहीं हैं. पर अगेन पॉइंट उसमें फिर एक और ये भी आ जाता है जो कि और भी लोगों ने रेज किया है कि इट्स नॉट मे बी सो मच एन इशू ऑफ फाइंडिंग लाइक पीपल विद स्ट्राइक रेट्स ऑफ लाइक 170 180. इट्स मोर एन इशू ऑफ काइंड ऑफ फिक्सिंग योर स्ट्रैटेजी. क्योंकि अगर आपकी स्ट्रैटेजी है कि पहले 10 ओवर में आपने 60 रन मारने हैं तो फिर तो आप भूल जाएं कौन से बंदे आएंगे, कौन से बंदे इतने रन मार सकते हैं इन द लास्ट 10 ओवर्स. चाहे आपके पास हिटर्स क्यों ना हो, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम इन एंड स्टार्ट हिटिंग राइट अवे. एंड दैट्स द प्रॉब्लम वी सॉ अगेंस्ट श्रीलंका एज वेल. क्या हुआ, आपने विकेटें बचाई हुई थी लेकिन द मोमेंट यू स्टार्टेड हिटिंग आपने 3 विकेटें एक ओवर में लूज कर दी जो श्रीलंका के खिलाफ हुआ था इन द फाइनल. So that strategy might not be so effective, especially if you're chasing a slightly bigger target. अगर आप 140 150 तक कर रहे हैं फिर तो कोई मसला नहीं है. अगर आप 170 प्लस कर रहे हैं तो then that's a problem. Then you need to go hard from the very beginning, which is possible अगर आपके प्लेयर्स अगर फॉर्म में भी हो. I remember जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान ने किया था चेस ओवर 200, बड़े आराम से चेस कर लिया था. इसमें रिजवान और बाबर जो है वो आई थिंक उन्होंने 200 की पार्टनरशिप मारी थी. सो अगेन फॉर्म का मसला भी है because you know Babar is not in form, Fakhar was not in form. Fakhar, who was the best performing PSL player, was not in form at all. Like उसकी फॉर्म पहले की चेक करें, अब देखिए ज़मीन आसमान का फर्क है. लाइक वो बात है बंदा 50 की एवरेज और 170 की स्ट्राइक रेट से बैट कर रहा है. सडनली ही कैन डू इट. तो हाँ, he was like it makes sense, his selection makes sense. Obviously अगर आप उसका रिकॉर्ड देखते हैं तो he makes a lot of sense, but वो परफॉर्म नहीं कर रहा था जब वो इंटरनेशनल लेवल पे गया. तो obviously they have to kind of find an alternative. So for me, I guess जो कुछ प्लेयर अभी लेके आ रहे हैं, for me the main purpose of this would be to find out कि वो कितने पानी में हैं, परफॉर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. कॉम्बिनेशन आई थिंक वुड बी अ वेरी बिग थिंग कि कॉम्बिनेशन टीम का क्या बन रहा है. बिकॉज नाउ पीपल वो कह रहे हैं अच्छा जी अगर हैदर अली को लाएंगे तो दे माइट ब्रिंग इन हैदर अली एज एन ओपनर.
and not play him down the order, or will they play him down the order, will they play क्या नाम है शान मसूद down the order. अभी वो भी आई थिंक एक चीज़ होगी कि पाकिस्तान की sort of एक टीम के अंदर आई थिंक दैट माइट बी द एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ लाइक कॉम्बिनेशन एंड स्ट्रेटजी अपनी चेंज करने के साथ इफ दे डू दैट टू सम एक्सटेंट ऑफ द ट्वीक इट. ये वो बात है एकदम रेडिकली तो स्विच नहीं करेंगे स्पेशली बिफोर द वर्ल्ड कप क्योंकि वो इतनी बड़ी एक्सपेरिमेंटेशन तो नहीं होने वाली बट दे माइट बी लाइक अ माइल्ड ट्वीकिंग ऑफ सम सॉर्ट जिसकी अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा रीएडजस्ट करने की कोशिश करें या रीअलाइन करने की कोशिश करें कि अच्छा ठीक है वी सॉर्ट ऑफ रिकॉग्नाइज कि शुरू में इतने स्लो स्टार्ट्स आर गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम सो वी नीड टू फाइंड अ वे अराउंड इट. So maybe they can try to do something like that. So I mean that's the purpose of the tour in my eyes. कि इसको थोड़ा फायदा उठा सकते हैं. I don't know आपके माइंड में क्या चल रहा है किस हिसाब से but we want to see out of the tour and what we want to achieve from the tour. Because obviously 7 match T20 series है उसका कोई बहुत बड़ा नहीं है. We will remember it months from now to be honest. But वही बात है कि हम उसमें से क्या हासिल करेंगे. That's the thing. Yeah. So firstly I think जो हम clearly so one fear that I have is कि ये हमारा बहुत एक attitude रहा है कि we're not ready to experiment in like big matches. So like I can understand if it's like a World Cup, right? So World Cup if you're facing England, obviously you're not going to experiment with an Amir Jamal. But this is a bilateral series. But if you look at our record, even like his management ka record or his team ka record, we are not open to taking risk, even with like smaller teams. हमें I think एक sort of performance anxiety है या winning anxiety है. Like we have this tendency कि हम अपना जिस स्क्वाड से हम कंफर्टेबल होते हैं ना हम उसी के साथ रहते हैं उसी को सेलेक्ट करते हैं बार बार एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी लॉस्ट द एशिया कप वाज बिकॉज हमें लग रहा था कि यू नो हमने पिछले वर्ल्ड कप में इतना अच्छा परफॉर्म कर लिया हम इसके साथ भी इसी स्क्वाड के साथ सही कर लेंगे सो दैट वाज क्या कहते हैं दैट इज़ अ प्रॉब्लम. तो माय फेयर इट्स लाइक यू उस्मान कादिर को इन्होंने सेलेक्ट किया था इन अप्रैल 2021 एंड उसके बाद से ही हैज प्लेड ओनली अ हैंडफुल ऑफ मैचेस. उसको नेट बॉलर की तरह ही लिया था. शाहनवाज दानी का यू हैव सीन केस किया है. सो इस मैनेजमेंट का दे आर नॉट रियली कॉन्फिडेंट विद एक्सपेरिमेंटेशन. So what I was thinking was कि like इन्होंने आमिर जमाल को select किया इन्होंने अब्रार अहमद को select किया, right? So what I essentially was thinking is कि from a smart selection point of view be like okay this is going to be essentially a job interview for everyone involved. सही है. अगर बाबर या रिजवान ओपनिंग पे नहीं कर पाए तो हैदर जगह ले लेगा, शान मसूद जगह ले लेगा. या अगर and if you look at Amir Jamal's record, you see that he doesn't have a lot of 50s and 47 is का high score है, which means that he comes down the order or down the order वो मारता है. So like I'm guessing ideally so like an Asif in some ways you should make Asif compete with him, right? To see like if he is a viable replacement. He has an average of 30. Asif doesn't even come close if he performs. So like Amir Jamal would be an easy pick for the team. But I don't think we're ready to do that. I think हमारी management on the top level तक like रमीज राजा तक अभी तक आसिफ की तारीफें कर रहे हैं. They're like क्या कहते हैं he's a great player, great asset, which he is. There's no denying that, but that's an asset and in the absence of other assets, right? No. So like so like उस sense में I don't think our management has the guts to or the sort of क्या कहते हैं or the courage for like sort of experimentation, especially in a match against England. एक तो हमारा वो रमीज राजा से जो mindset आता है कि like home series है तो home series जीतनी ही जीतनी है. This is a very I think 80s mindset. Home series तो जीत हारते हैं लोग. It's very common. Like हमने हमारा इतना fair है कि हम pitch को बिल्कुल ही मरियल बना देते हैं. So like उस sense में can you give me a सारी series ही fuck इस वजह से होगी. So essentially so we don't really have that courage. And उस सेंस में आई गेस क्या कहते हैं आई एम काइंड ऑफ सैड कि ये लोग जो है इन दोनों प्लेयर्स को बैठा के रखेंगे एंड बाबर इज गोना ओपन एज यूजुअल. लाइक आई हैव सीन लाइक दिस डिड यू हियर व्हाट आकिब जावेद सेड अबाउट बाबर? क्या उसने कहा था? हाँ वो क्या कहते कि मतलब हाँ हम पुश करते कि वो 50 मारे ताकि मतलब उसकी टीम जो हार जाती थी समथिंग लाइक दैट. आई रिमेंबर उसके बारे में बात कर रहा था. आसिफ के बारे में भी बात कर रहा था और भी कुछ. एंड पीपल वर एक्चुअली थ्रोइंग स्टैट्स कि यार इन प्लेयर्स का आपके खिलाफ ये रिकॉर्ड है, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं. आई काइंड ऑफ रिमेंबर दैट एज वेल कि यार इस बंदे का आपके खिलाफ 40 का एवरेज है और 170 का स्ट्राइक रेट है. इस बंदे का ये है. मतलब देयर वाज लाइक अ काउंटर आर्गुमेंट गोइंग ऑन बिलो द कमेंट्स एज वेल. आई रिमेंबर मैंने ट्विटर पे देखा था
तो लेकिन वो ये कह रहा था, आई रिमेम्बर अबाउट क्या नाम है अपना बाबर के, यार उसको हम जानबूझ के आउट नहीं करते थे क्योंकि Yeah. उसके रंग को नुकसान होता था. And so they asked that to Babar, and honestly, ek to, to ask the Pakistani captain that, and the best player in the world, that would have been very embarrassing. But हाँ. Babar does not seem, I guess, remorseful. I think वो ego वाली बात आ जाती है. And like you know how Jared Kimber says that the best players in the world have a huge ego, and understandably so. That's why they're the best, right? बिल्कुल. But like when you see Babar's body language and like his sort of responses that he's giving, because a lot of journalists are asking if he should come down the order, and उसके किसी रवैये से नहीं लग रहा कि वो पीछे हटने वाला है, and that is हाँ, dangerous. वो बात है कि might see that, वो बात है with people who like him who are always willing to take up challenges, they see it as a failure. They don't feel Yeah. like they should step back. That's not their attitude. That's not how they came to be what they are. Obviously, consider the kind of insane amount of competition that you face to become an international player, especially in Pakistan, जहाँ पे इतने ज़्यादा मतलब वो बात है, लोग हर वक्त तैयार बैठे हुए हैं आपको पोजीशन लेने के लिए, और be the premier player for Pakistan for a particular era, आप कह सकते हैं 2015 onwards, कि he is the player of this generation and probably one of the greatest batsmen to be ever produced by Pakistan. So obviously, if he got to that level, तो उसमें कुछ वो उस तरह के जरासीम तो मौजूद होंगे. He is definitely one to step back. And वही बात है, वही same चीज़ जो आपकी strength होती है, that can become a weakness at other times. So इस situation में maybe where he could step back and he kind of can put the team above him, that could become a problem for us as well. But I mean वही है, देखते हैं अभी कि क्या situation है. It's also about how much he can evolve his own game and even like maybe sort of change the strategy of the team as well. Maybe to realize, अगर वो उस बात को realize करे कि अच्छा हाँ, this is a mistake and we need to kind of evolve it. अगर वो ये समझ भी जाए, that's still fine. But वही बात है कि अगर आप कहेंगे नहीं यार हमारी strategy तो ठीक है, वो वही बात है कि हर दफा चलती नहीं है. Sometimes it works, sometimes it doesn't work. तो वो एक डिफरेंट चीज़ है. If they still refuse to change it, that's a different problem. I feel like अगर सीरीज में यही फायदा होगा, अगर होता है, तो ये है कि if they try to experiment and see के different combinations क्या try कर सकते हैं, different खेलने के तरीके ट्राई करने के लिए. लेकिन अगेन प्रॉब्लम यही है, which you recognize, कि maybe management उस तरह की नहीं है. They're kind of risk averse, कि वो उस तरह का risk probably जो है वो नहीं लेंगे. But anyway, coming to the prediction of it, I don't know क्या होने वाला है आगे जाके. But how do you see the series progressing? के मतलब पहले बता दें कि prediction आपकी क्या है and why are you making this prediction? I feel like England might win the series, and उसकी वजह is कि अभी तक कोई हमारी Would you pitch guess improve. कि क्या होगा series में? Like Yeah, उसकी 5, reason is whatever it is, जो आपको mind में. yeah, so उसकी reason is कि I don't think मार्च से हमने pitches अपनी कोई बेहतर की हैं, and उसकी वजह से like अगर वही मरियल road pitches हैं, तो if you look at the strike rates and the averages of these English players, they're gonna smash us all over the park. It doesn't matter if they bat first or ball first. Like जब भी आएंगे मारेंगे, and that is dangerous considering के like you're giving one of the best T20 batting sides a batting pitch. Um, so उस मामले में it's going to be very, I don't know, like depends on the pitch. I hope they have improved the pitches. रमीज राजा वही बात कर रहा है कि हमने ऑस्ट्रेलिया से पिचेस मंगवाई, वो आके नहीं दे रही, एंड मीनवाइल हमारी सीरीज हो जा रही है. सो लाइक अच्छा, वो IMF के लोन की तरह है ना, पिचेस बस आ रही हैं, बस अभी आ रही हैं, 2 दिन में आ रही हैं, प्रॉमिस डूड आ रही हैं. See, the issue is कि अभी इतना पैसा खर्च कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे, the time and the money that they spend importing pitches, एक तो इकोनॉमी पे बर्डन पड़ रहा है, ठीक है, इंपोर्ट्स कम करनी है. हाँ, So like का मसला बना हुआ है. वो कह जी दूसरा वो ये कंटेनर में पड़ी हुई है, पिचेस हमारी कंटेनर में पड़ी हुई हैं, हम अभी मैच से खेल सकते हैं. दूसरा ये कि like they could have spent that time and energy, just naturally creating pitches. Like 6 महीने में हम अच्छी बना सकते थे अगर हम चाहते तो, बट नहीं, हमें ऑस्ट्रेलिया से लानी, एंड उसकी वजह से आई थिंक वो थोड़ी सी क्या कहते हैं, आइंदा आने वाली सीरीज मुझे कोई अच्छी नहीं लग रही. सो अच्छा, I mean, अगर if you ask me, I don't know. I have a feeling Pakistan will win. I think it will be a close series. It probably like 4-3 or something. मुझे लगता है in Pakistan's favor.
Um, I don't know if it'll go to the last game or not. Probably उससे पहले ही decide हो जाएगा. I foresee a couple of maybe one or two data buzzes in between as well. क्योंकि I feel like अगर पाकिस्तान का शुरू में थोड़ा momentum हुआ coming into this और शुरू में वो 2-3 matches जीत गए, so I think they'll manage to kind of stumble their way into a series win. They will lose momentum as they go along. I feel जितना मैचेस आगे चलते जाएंगे, बट अगर शुरू में ही एकदम मुझे फील हो रहा है कि मे बी बिकॉज ऑफ द लॉस इन एशिया कप एज वेल, तो एफर्ट वो काफ़ी मारेंगे, शुरू में जान मारेंगे, और इंग्लैंड वालों को पहले 2-3 मैचेस में टाइम लगेगा टू एडजस्ट. देयर आर सम प्लेयर्स हु प्लेड इन द पीएसएल, यस, सो उन्हें कुछ एक्सपीरियंस होगा, बट नॉट ऑल ऑफ देयर प्लेयर्स हैव प्लेड हियर. So majority of the team doesn't understand the conditions as well. So उस वजह से मुझे लगता है कि शुरू के कुछ मैचेस में 2-3 में पाकिस्तान को एडवांटेज होगा, and they might be able to get into a big lead at the start. Being able to start to pull it back, I think they might have enough momentum to just get over the line. So like maybe about a 5-2, 4-3 is what I'm looking at. But I think first half would be a lot easier for Pakistan. I think first 3 matches would be a lot easier. Last 4 would be a lot harder. मुझे ये लग रहा है at least. From how I see it. अगर वही बात है pitches अगर kind of dead किस्म की हुई तो again we need to disadvantage होगा, because there are people who depend on a lot of true pitches जहाँ बॉल बल्ले के ऊपर आती है. तो अगर उस तरह की पिचेस ना हुई जहाँ पे वो रुक रुक के आ रही है, तो उनको मसला होगा कि उन्हें बार बार जोर लगाना पड़ेगा, और दे probably snatch at their shots and end up getting out. तो अगर वो उस तरह का पेस ना हुआ तो एक्चुअली पाकिस्तान का एडवांटेज उससे भी हो सकता है, because a lot of Indian hitters won't be able to trust the bounce as much, or at least get the ball off the bat with as much speed as they might want. So उसकी वजह से भी थोड़ा सा पाकिस्तान का एडवांटेज हो सकता है possibly, which they might be able to utilize in the earlier matches for sure. So वो I think एक उनको advantage है. Plus Pakistan has superior spin attack as well, which on these pitches will help a lot. So if Nawaz and Shadab perform as they had done before in the Asia Cup, I think they will have a huge point to they will also play a big role for the Pakistan team here. So I think उसकी वजह से मुझे लगता है जीत तो शायद जाएंगे, बट वही बात है कि कितना इस सीरीज से सीखेंगे, और वही बात है कि कितने नए प्लेयर्स हमें इससे मिलेंगे. आई डोंट रियली सी इट बीइंग दैट useful for us, at least in terms of the World T20 की preparation के हिसाब से. Maybe a couple of players that we brought in, 1 or 2, शायद अगर हैदर और शान को थोड़ा हम जेल इन कर लें टीम के अंदर, I think that would be the biggest thing for me. But outside of that, I really don't see कि इस जो tour से हम और क्या achieve करेंगे. But yeah, if these 2 or 3 things can happen, then I think it will be as successful as it could possibly can be, to be honest. बाकी तो I don't see that much happening from this tour, honestly. So Yeah. ठीक है, I think if you have any parting thoughts तो कर लेते हैं, otherwise I think I've said all I can say about this series. Yeah, I think अगर ये बैटिंग पिचेस के बारे में कुछ नहीं कर सकते, the least they can do is कि boundaries बिल्कुल पीछे, like बिल्कुल old school style. I don't think there's any regulation that's going to stop us from doing that, and that would be a serious setback for these batsmen, because these batsmen are really good, but they are good in terms of like the modern boundary length, which is usually shorter, right? So if we pull the boundaries back, we are essentially taking away a major advantage that they're using. मुझे मसला है कि हमारे प्लेयर्स को ज़्यादा नुकसान होगा कि हमारे प्लेयर्स की इतना जोर में है नहीं कि वो वहां तक लेके जाएंगे, कट्टी उनसे लगने नहीं वाले. तो उसलिए तो फिर आमिर डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि उस भाई ने ऑल फोर्स पे अपना काम बनाया हुआ है. वो तो कहेगा मैंने मार, ये मसला ही कोई नहीं, मुझे तो छक्के चाहिए ही नहीं, मेरा देखो. तो ये सीन है. चलो ठीक है यार. So let's hope कि जो हमारी गेम होगी, I think the game is on Wednesday 7:30, right? So Wednesday 7:30 को पहली गेम होगी. Let's hope for the best. अच्छे मैचेस हों, and we'll see you again next time with a new react. सही है, चले. Okay यार. See you later. Bye.